नमस्कार, कैप राजस्थान लेक्चर सीरीज के इस विशेष लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और व्यवहारिक विषय पर, जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू चूज अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड्स, यानी कि अनुसंधान विधियों का उचित चयन करने की रणनीतियां। आज के युग में शोधकर्ता, छात्र और प्रोफेसर सभी को यह पता होना चाहिए कि सही सवाल के लिए सही विधि कैसे चुने। गलत विधि चुनने से पूरा का पूरा शोध व्यर्थ हो सकता है। इसी विशेष विषय पर चर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया है इस विषय के एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व को। स्वागत है डॉक्टर लाधूराम चौधरी जी। आप वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के राजनीतिक विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट स्टडीज में पीएचडी पूर्ण की है। आपका शोध क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भू राजनीति, भारतीय विदेश नीति और सैन्य रणनीति पर संबंधित है। आपने फील्ड रिसर्च और मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड लर्निंग पर भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आज के इस लेक्चर में। और अब ये मंच में आपको प्रदान करता हूँ सर। आप हमारे सभी छात्रों को सर संबोधित कीजिए। थैंक यू मुरली फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं प्रबुद्ध ज्ञाता तो नहीं हूँ इस विषय का, पर जो मैंने सीखा है मेरे अनुसंधान के दौरान और मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान ज़्यादातर चीज़ें मैंने स्टूडेंट से भी सीखी। क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, उन सब के गठजोड़ को मैं आपके समक्ष रखूंगा। क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारे रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग, मोस्ट सूटेबल रिसर्च मेथड्स को अप्लाई करने की। जैसा कि मैंने महसूस किया है, जब हम लोग सिनॉप्सिस बनाते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल फेज है सिनॉप्सिस के अंदर, वो है रिसर्च मेथड्स वाले सेक्शन में हम क्या लिखें। मेरे अनुभव से मुझे जो चीज़ें पता है मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो सिनॉप्सिस में सबसे वीक जो एस्पेक्ट होता है वो रिसर्च मेथड्स वाला एस्पेक्ट होता है। और उसका कारण जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हमें रिसर्च मेथड्स की ग्राउंडिंग, उनकी इम्पोर्टेंस और उसमें स्पेशलाइजेशन पाने की, स्किल्ड होने की जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, वो ट्रेनिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं न कहीं ज़रूरत से बहुत कम है। और इसीलिए हम लोग उस सेक्शन को सिर्फ सिनॉप्सिस में एक रिचुअल्स के तरह मेंशन कर देते हैं, बजाय कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट थिंकिंग डेवलप करने की, स्किल डेवलप करने की। और हमारे एजुकेटर, ट्रेनर, सुपरवाइजर भी उसको उसी नज़रिए से देखते हैं कि रिसर्च मेथड तो बस आप कुछ लिख लीजिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स मेथड, ये वो, और हो गया, उसको कोई देखता नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कमी है हमारी रिसर्च ट्रेनिंग और रिसर्च को वैलिड, रिलायबल रिसर्च को प्रोड्यूस करने की। इसका खामियाजा ये है कि चूंकि हमें मेथड पे इतनी ट्रेनिंग नहीं है, मेथड पे इतनी समझ नहीं है, मेथड को लेकर हम अपनी स्टडी में इतने क्लियर नहीं है, इसलिए हम रिसर्च करने के बाद भी
अपनी रिसर्च को दूसरों को बताने से कतराते हैं या उतना कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं जितना हमें रखना चाहिए। तो ये जो लार्जर समस्या है, मुझे लगता है ये इस लेक्चर सीरीज में पार्ट लेने वाले लोगों का ही नहीं है, उन तमाम लोगों का है जो फील तो करते हैं पर उनके पास कोई समाधान नहीं है। और इस दिशा में मैं कैप्स की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही जेन्युइन मुद्दा, जो बडिंग स्कॉलर्स है उनकी दर्द को पहचानते हुए उठाया है। तो मैं कितना न्याय कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, पर मैं मेरी कोशिश पूरी करूंगा और ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि हम और मिलकर ये जो नॉलेज डिफिसिट ऑन रिसर्च मेथड है इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च मेथड किसी की कोई बपोती नहीं है। हर रिसर्च प्रोजेक्ट का, हर रिसर्च मेथड का एक सोशल डायमेंशन है और हम जब तक उस इंटरेक्शन को नहीं करेंगे तब तक वो कम्युनिकेशन गैप बना ही रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट, स्पेशली पीएचडी और एमफिल डेजिटेशंस की जो बात है, उसमें हम दो तरह के अप्रोच से रिसर्च करते हैं। एक है एक्सप्लेनिंग अप्रोच, दूसरी है अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। और हमारे रिसर्च मेथड इसी बात पे लागू होंगे प्रोजेक्ट में। सबसे पहली बात तो कि हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा हमारा पीएचडी का डेजिटेशन का टाइटल किस अप्रोच में है। इज इट इन एक्सप्लेनिंग अप्रोच और इज इट इन अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। नाउ यदि मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि एक्सप्लेनेशन इज मच more in the realm of scientific methodology, where a researcher attempts to explain the relation between the variables. It is a explanation of what is correlation between the variables, what is the association of different variables, how this association has evolved, and what are the abnormalities with regard to the commonly established association of variables. So in explaining tradition of research, we find 3-4 types of research methods. One is experimental research methods. That is more in the realm of science-based disciplines rather than social science and humanities, where we put certain hypotheses, certain observations, and certain correlation of variables on an experimental setup and then try to show up how this results it. In social science, since the experimental research is very, very difficult, we choose qualitative and quantitative research. Now, quantitative is an expansion of experimental research and scientific methods of modeling,
of computation, of calculation, designing on a numerical scale, where you can provide a numerical value to your variable. And you are attempting to verify, to measure, and to establish a kind of correlation and coefficient of correlations by giving them a quantifiable value, जिसको हम कह सकते हैं कि जब आप अपने चरों को संख्यात्मक मूल्य प्रदान करते हैं और उन संख्यात्मक मूल्यों को आप कहां से लाए हैं, आप विज्ञान की उन पद्धतियों से लेके आए हो जिसको सोशल साइंस में साइंस होने का दर्जा जो मिला गया है, जो पॉलिटिकल साइंस में उसको हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। और जो ये मेथड है, ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे बेस्ड है, ये मेथड फॉल्सिफिकेशन पे बेस्ड है, और ये फिलोसॉफी ऑफ साइंस के उस लॉजिक से प्रेरित है जो कहती है कि साइंस इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, and if it is an objective reality, it tells you something about truth which is very, very objective. But in the social science, there are also methods that provides you explanation is qualitative methods, qualitative risks methods, which is basically argues that it is not always the numbers, facts, objectivity of the truth, but it is the subjectivity of the truth. It is the value of culture and tradition that is impacting the science. In a way, the qualitative research method inform us the importance of words, importance of language, importance of images, visuals, importance of music, and importance of opinion, importance of narratives. So on the one hand, that scientific explanation coming from quantitative research says that these are not worth considerable variables because you cannot say anything significant about these variables. You cannot authenticate what is truth about it. But the qualitative methods say, research approach says that since this is coming from an experience of the group, the subject that you are investigating, and that experience is a very unique to that only subject which you are investigating, and therefore this is the ultimate truth. So now this has led to the debate, what is the ultimate truth? Is it the scientific quantitative methods, or is it the qualitative research approach? And this has led them to adopt, to devise a new method which is known as mixed research method. Mixed method research. What is it? Mixed method research is actually taking advantage of the quantitative and the advantage of the qualitative. So basically discarding the disadvantage, limitation of both the approaches and saying that this is how we can combine qualitative and quantitative. And then we can say something very authentic. But these all are grouped into an explanating tradition of research. Then you have a understanding tradition of research where your questioning is start to challenge, to explore,
socio-historical construct of knowledge production. And this exposition of or deconstruction of these historical social structure needs a different approach altogether. And that cannot be quantified. So, for that understanding tradition, you need interpretations, you need observations, and your interpretation as a researcher are unique in a way that the other researcher may provide totally different interpretations. The other researcher may observe totally different out of that socio-historical reality. And I will come to that with an examples that how the interpretations are and observations are powerful research tool in critical research, in the understanding tradition of research. And then in the understanding of the research, you also have an archival methods of research. You collect artifacts, manuscripts, heritage from the manual and digital archives. And that brings it to the society that this is how it existed. And this material reality has this kind of attributed socially attached meanings to this material fact. So the understanding tradition of research method is coming from a different theoretical orientation. So what I would summarize the argument is this, that what should be your research, appropriate research method? The first thing is you have to lock it. What is your theory that you have taken in your study? What is your approach? What is the purpose and goal of your research? What are the sources of your research? So, to choose your research method, you have to identify which research method is best suitable for which theory. Now, if you are taking a realism, and I'm coming from the discipline of international relations, so if you're taking realism in international relations as a theory of your research, and you're taking critical research method, I think that will land you in trouble. Because realism is built as a theory on the scientific principles of research method. So this should not be a mismatch between the theory and the method. It should not be a mismatch between the approach and methods. It should not be a mismatch between the goal and the methods. Now, every research project has specified goals, objective, purpose. What do you want to investigate? Now, until and unless you know that, you will not be able to apply a suitable research method. So, I would say that before choosing appropriate research method, you have already cleared two hurdles. And I take research as an hurdle race.
बाधा दौड़ जिसको आप कहते हैं, रिसर्च बाधा दौड़ की तरह है। जैसे जैसे आप एक बाधा पार करते हैं, आपके सामने दूसरी उससे बड़ी बाधा होती है। And to finish off that project, you have to clear all the hurdles. Now, the first hurdle that came to your mind was choosing a theme. Say, for example, political science as a discipline has so many themes. Whether you have to go to the political theory or comparative politics or international relations or public policy. Now you specified it. Then you have specified the topic. Okay, on public policy, I will do research on Narega and RTI. So now next hurdle is research method. How you will do it? What is research method as a subject of study? There's a difference between the methodology and methods. Methodology is the study of methods, but research methods are techniques of doing research. So research methodology is a whole subject in itself, but research method is in one part of methodology. So methods are about techniques of carrying out your research. How do you do your research? And to find out that, one point I already cleared, that you have to establish your research, whether it is in explaining tradition or second is in understanding traditions. The next point, who will help you that what should be your appropriate research method of your study? The first guide is not your supervisor to find out this, is not your peer to find out this. Nobody can tell you which is your suitable method of study until and unless who knows your subject of research more than you know. And I think nobody can understand that. Yes, since you are doing PhD, you know better than anybody else. So what you should do, क्या होगा जो आपकी रिसर्च मेथड कौन सा सही है, इसको सबसे बेहतर जो कोई बता सकता है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. When you do review of literature, you refer to, read and reread and critically analyze and dissect each and every piece of writing on the topic you are researching. If you are not doing that, then you are not doing justice with the topic. So when you take a review of literature rigorously, you also follow it that what they have followed as a method on the same topic. So your review of literature is the foundational guide to appropriate what is good method for you. Because review of literature will tell you that so and so have applied this method on the same subject but did not work. So and so applied this method for this study and this led to this. So and so study has not applied this particular method. If they would have applied this, then this result would have been different. So it is only the research method that you are going to apply will come out of what has been applied on the literature that you surveyed on that topic and what is left out. Now, review of literature will tell you two ways. One, what method did not work, so that is not appropriate.
and 2, what has not been used, and 3, what has been worked very well, but you are not convinced with that method. So it's like, a cooking recipe. You have all ingredients of cooking a dish, but you don't know how to cook it. So what do you do then? You basically have to sit down and take a rest and break down all the things that you have got into bite-sized fragments. जो भी आपके सब्जेक्ट पे लिखा गया है, उस सब्जेक्ट को रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के दौरान आप छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। और उसके बाद examine each piece very carefully. Quantity of that, impact of that, how that will impact my recipe, and then put together and get an information that if you combine all these small fragmented pieces into a group, what will happen? How these each pieces of the recipe will react? What will be their individual place and role in the whole of the new dish that you prepared? So review of literature tells you that, okay, this study has applied this method, this has applied this method, this has applied this method, and I now studying all these methods, think of what I think about all these methods, which is good and which is not to be applied. Now, which is good and which is not to apply, I again will take you to the what is your purpose? What do you want out of your research? Why you are doing your research? Ask this question to yourself that the whatever research project you are having, why are you having this research project? Why are you working on this topic? Are you working for a purpose to liberate somebody? Are you working to deconstruct? Are you working to defend some hypothesis? Are you working to falsify some hypothesis? Are you trying to explain certain puzzles? Because why? What is the purpose will guide that how you should do it. Because once, as I said, you have all ingredient of the cooking, but you have to decide what you want to cook. Do you want to cook a rasam or a sambar or a vegetable with gravy or a fried vegetables? What do you want to make it? What is your purpose? Once you are clear about your purpose, I think you will be clear about whether you will use a mixed methods or whether you are okay with archival methods or are you okay with quantitative qualitative methods. And the third most important factor to decide is your time, available energy, and available resources. How much time you can consume? That is important to choose what method you are referring to. How much energy do you have and how much resources do you have? Say, for example, if you have taken an interview methods in your research, say, and then you aim that you will take 500 interviews. Now, do you have a time to take that 500 interviews? Do you have energy to take that 500 interviews? Or do you have resources who will fund you? If you don't have, then you have to customize your research methods.
Maybe somebody has taken that research method you find in your review of literature, but you can't do because it's a PhD project. The study that you are referring there was that study PhD project was funded by a longitudinal project of 5-10 years. Do you have that much of fun? So I think these are some of the factors that if you keep in your mind while choosing the methods, that will help you. Now I will stop here, and I will be eager to have interaction with you and anybody who would like to share their insights that what they are facing with applying research methods and how should they do. We can have a dialogue on that. Thank you. थैंक यू सर। बहुत अच्छा इंटरेक्शन, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ सर। आपने एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन और अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशन दोनों के बारे में एक विशद चर्चा की। तो मैं आप सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि सर से रिसर्च मेथड या रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित जिस भी प्रकार के प्रश्न आपके हों, आप सभी सादर आमंत्रित है वो प्रश्न करने के लिए। Hello, sir. I have a Yes. doubt. Yeah. Sir, when we are applying mixed methodology and we see there is a contradiction between the quantitative or the objective data and the subjective data. So, how to identify that which data or which method we should give more priority and how to incorporate such things? Okay. Okay. And sir, I have one more doubt. As you just mentioned about archival method, so is it same as the historical method, or like what is the difference between it? Is it the study of white paper documents or the previously done researches, or can you please say, tell us more about it? Apurva, so very good questions. Now, see, quantitative and qualitative are research methods as well as research techniques. Okay. What I mean Yes, sir. by this is that techniques are actually about collection of data and organizing those data and providing certain values or interpretation or analysis to that data. So these are the techniques at one place. At the other place, these could be methods. Means these are also philosophies of how you should approach that what constitutes a data. Now, what is in your research is considered as a data. As sir, I'm working on cyber diplomacy of USA. So the data is around how USA is coordinating and cooperating with different countries bilaterally and multilateral institutions. So there is a difference when we talk about that how USA is involved in building cyber norms in this international order. This is the main perception, but rather when we look at the data, it is like that USA although is like very active in building the norms, but when we talk about continuing them or following them, there is a very big like drench and a very big lag. So when we look at subjective approach, so the perception is that the US have very good cyber security and cyber cooperation and diplomacy, where the military deterrence is high. But when we look at the critical infrastructure, which is more the private owned, it is vulnerable. And so this is a very big contradiction in my research, that how to approach this, like where the subjectivity and objectivity are contradictory as far as I'm very new to this study, No. as I'm just doing my coursework. So uh, that's why. Yeah, like you really have certain fundamental concerns. Number one is that subjectivity and objectivity are not contradictory. First thing.
These are two ways to know the truth. Okay. So you have an objective truth and you have a subjective truth, and both are equally valid truth. Don't think that the subjective truth is more inferior. Why I am saying so? That there are some reality which you can model or represent through mathematical representation. Okay, sir. But there are other reality which cannot be modeled on mathematical terms. Yes, sir. Are you getting the point? Yes, so there sir. are tangible and there is intangible. But then again, you think all intangible things are not something which cannot be quantified. Intangible things also can be quantified. Say, for example, emotions. What would you say about emotions? Are it is quantifiable or not? No, sir. Emotions are not quantifiable. Emotions are quantifiable. Refer to any study in discipline of psychology. Okay, sir. Perception is quantifiable. Ideas are quantifiable. But normally we think that these are things that cannot be quantified. Yes, so, sir. what I'm saying is that what is that you consider as a data? Most, most often researchers think that data means something is in form of figures. Yes, sir. Something that is in form of, you are saying, the critical infrastructure. Yes, sir. But it is not always the case. Data for your research cannot be or may not be data for my research. And data is not always the figure that you quantify. Data could be anything that is crux of your research project. So data could be, say, for example, for my research, data could be belief systems. Data could be culturally practices. Data could be lived realities. Data could be everyday life struggles. And I use those data as to illustrate what is diplomacy. Now, you would say that what has to do with the everyday life of a villager and the diplomacy between the US and America. But I can illustrate the everyday life in a globalized world is impacted by what? It's impacted by the dynamics of international politics. See the LPG gas crisis. Who is suffering most in this whole crisis? The lady, women who lives in the margin of this country. They are most sufferers. Now, those suffering is also a subject of international diplomacy. If your project is to identify their suffering as in implications of international politics, if not, then you will say that, oh, international politics is all about military, tanks, missiles, nuclear submarines. So when you are talking about Indo-US relations, I think you have to narrow it down and say, in Indo-US relations, this is what I consider as in data and this is how I will proceed. Number one. Number two, when you ask about the archival method and historical methods, see, history as a discipline has a different philosophical orientation. So all archival doesn't only
is about the historical methods. Historical method is tracing out the continuity of evolution and leading to an abstraction. But archival research is what do you say on the basis of those documents which are not discussed, not debated, but still that is a reality. So you really not able to or may not generalize what those archival documents has values for today, but at least you can say these are the interpretations, these are the realities, these are the facts, these are the power dynamics, this is how society operated, and these are my sources that inform me. So in India-US relations, as your topic, you can take archival method as a research method. Because first you identify what data you constitute, what kind of things that you want to do, and then look for archival data for that. And then say, this is how things has happened. Okay? सर हमारे पास वेबसाइट के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सुजाता का प्रश्न है, पीएचडी स्कॉलर है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से। लिखते हैं, सर मैंने अपने यूजी के समय रिसर्च मेथोडोलॉजी को काफी अच्छे से पढ़ा था, लेकिन अब पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका कोई डायरेक्ट उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्या आप मुझे ऐसी कोई पुस्तक सुझा सकते हैं जो मुझे रिसर्च के तौर पर रिसर्च मेथोडोलॉजी समझने और उसे अपने शोध में लागू करने में मदद करे? वर्तमान में मैं अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रही हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, रिसर्च मेथड्स की किताबों से पढ़ने से, जैसा सुजाता लिख रही है कि मैंने खूब पढ़ा और मुझे समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रिसर्च मेथड एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है ना, आप करके ही सीख रहे, लर्निंग बाय डूइंग का विषय है। जब तक आपने पढ़ लिया और किया नहीं, तब तक आप नहीं पढ़ कर सकते। इसमें अब देखिए, किताब सजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि उनकी रिसर्च का डोमेन क्या है, उनकी रिसर्च की पर्पस क्या है, उसकी रिसर्च की थ्योरी क्या है, उसकी रिसर्च का स्कोप क्या है। परंतु मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये वैसी ही एनालॉजी, अगेन आई विल टेक इट यू टू कुकिंग। आप कितनी भी कुकिंग रेसिपी की किताबें पढ़ लीजिए, जब तक आप वो रेसिपी अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है पढ़ने से आपको ये लगे कि आपको आता है, बट व्हेन यू डू इट, देन ओनली यू नो कि मुझे कितना आता है। सो रिसर्च मेथड में भी यही दिक्कत है कि जब तक आपने अप्लाई नहीं किया है, तब तक आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं हुई है, जब तक आपको लर्निंग बाय डूइंग नहीं है, तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि जैसे मान लो ये एक लेक्चर हो गया, इस एक लेक्चर से रिसर्च मेथड्स का बहुत कुछ सुधार नहीं होने वाला है। जब हम कंटिन्यूसली ही इसको करेंगे, और एटलीस्ट आपने देखा होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के वर्कशॉप 10 डेज के होते हैं। क्यों 10 डेज रखा गया है? क्योंकि उसमें आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट के रिसर्च के कंपोनेंट को और आपको अप्लाई करना होता है कि आगे ये कैसे प्रोग्रेस। एंड यू लर्न रिसर्च मेथड्स थ्रू डूइंग रिसर्च। अभी आप प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें आपको सही लगेगा कि हाँ मैंने किया, बट एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि मेरा ये मेथड ही ठीक नहीं है ना। ये तो वैसे ही है जैसे आप कुकिंग करते हैं, आपको लगता है कि कल है ना इससे बेहतर है ना बनाया जा सकता है, सेम रेसिपी सबको दे दी गई है, सेम है ना इंग्रेडिएंट सबको दे दिए गए हैं, आप देखते हैं एंड ऑफ द डे है ना कोई कुछ बना के ला रहा है, कोई कुछ बना के लेके आ रहा है। सो रिसर्च मेथड में भी ऐसा ही है कि एक लेक्चर मेथड से ये नहीं होगा। हम बैठे, हमारे प्रपोजल हो, हमारे प्रपोजल के है ना ऊपर गहरी डिबेट हो, और उसमें हम तय करेंगे किस पर्पज से ये रिसर्च की जा सकती है, इसलिए ये रिसर्च इसमें बेटर है। यही कहना है मुझे सुजाता जी। Good evening, sir. I am हाँ, good evening. Supriya
एज अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स तो अभी रिसर्च में इतना पता नहीं है, तो आपने बोला दैट देयर इज अ लूप ऑफ हर्डल्स एंड द फर्स्ट इज टू चूज अ थीम. So like if the broader theme suppose is from political theory, और फिर उसमें हम क्या जैसे WPT और IPT के इनसाइट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सोलली एक थीम ही चूज. जैसे फॉर एग्जांपल if I choose feminism from political theory, तो थीम पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, बट देन आई पुट इन thinkers and philosophers from WPT and IPT. So is it right or wrong? Start from a very generalized subject, then step by step you have to narrow down it. Now you said political theory, then Indian political theory, and within the Indian political theory you came now down to feminism. Now if you have like feminism as a subject within the Indian political theory, there's a whole paradigm of feminist methodology, and you can read an article by Mathurei Krishna Raj, the feminist methodology on EPW website. Okay. The feminist, and then you will find out that why feminist methodology is important, is distinct, why we need to put an adjective of feminist before this methodology is divided to that extent. Yes, if you take a feminist thinker or feminist political theory in Indian realm and you don't apply feminist methodology, your research really goes nowhere. Okay. Because feminist way of doing things and patriarchal way of doing things are different. Oh, yes, sir. Yes. So you have to find out, to read a feminist thinker, the feminist way of doing things. Say, for example, one thing that we often are Nari Vandana. भारतीय नारी तो है ना शक्ति है. So why do you need to talk about empowerment? Now, all this discourse, Indian Nari is a great, are based on patriarchal methodology. But the feminist argument is that you are saying that women has been great all in the Indian heritage and Indian discourse and civilizational narrative. Where are women as a thinker? Why you have not considered them as a thinker? Then you said, okay, what has been written in the text actually, and what has been talked in the popular sentimental values. So then differentiating it, then you will ground it into the true feminist orientation, saying, though the whole big talk about women's empowerment and women's glory is to cover up the exploitation of women. This is how, like, you are right on your approach that you have to step down. ये इस तरह से है रिसर्च में जैसे बावड़ी के अंदर आप घुसते हैं. तो जब आप टॉपिक चूज करेंगे तो you have to go into that depth, and as you go deeper you also has to know how to save yourself. Okay, sir. Hi, sir. My name is Nick Sagwanshi from Jaipur. First of all, thank you that you relate some topics from the real life kitchen areas like the rasam, rice, sambar, cookies. And actually, I'm very new from this era. For the PhD, I got selected from the Kota University. My very specific topic for that, which topic is good for the PhD. I'm not yet got the DRC meeting and that all. So very wondering about the which topic is good for me. My concern and interest area is the geopolitics. First is the connect with the South Asian West issues, diplomatic issues, and the second is the gender issues, and where you relate with the umbrella term with the LGBTQ rights, and the third one is the government policies for the United States of India. So फॉर द हिंदी पट्टी क्षेत्र के लोगों के लिए भी मैं ये थोड़ा सा कन्वर्ट समथिंग कि 10 से 15 साल के उपरांत जब हम देखें इन सब चीजों को, जब हम पीएचडी का वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली 3 to 5
5 years they'll be get it from. तो इसकी उपयोगिता क्या रहेगी आज के समय में अगर हम इन सब टॉपिक्स पे अगर काम करना चाहे तो कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा रहेगा? This is really a $1 million question, and I'm really sorry that I cannot tell you that which topic will be good down the line for next 10 to 15 years, because as Trump and all other big leaders of the global order and the way things are happening, we are really not sure what will happen. But I can tell you that to choose a topic, what matters more to me, not that what would be the most career positive, career oriented topic, but what is your passion? If you don't have a passion, I will say, okay, geopolitics and West Asia, and you don't have a passion of geopolitics in West Asia, what will happen to you? So it's really not like choosing something the best out of all. It's about what interests you most and what keeps you engaged with that. If that is the thing, I think you can be best in your field, any topic that you choose. And if you are best in your field, any topic you take, any work you take, you are ruler of the world. Okay. But So sir, if the second you, question I raised in my mind, that actually material issues, the sometime that me, that a newcomer of the scholars that are facing, just like that we love to the chicken changeji, but हम chicken ही नहीं मिल रहा था, फिर chicken changeji बनेगा कैसे? Just like to the material actually, I just interested in kind of the global issues especially. So फिर material का issue बहुत पड़ता है. So इंटरेस्ट अपनी जगह होता है बट मटेरियल मिलता ही नहीं काम करने के लिए, वो थोड़ा इशूबल होता है बहुत बार. yeah, that is true. But material हम ही बनाएंगे. Okay. हमने अपना पैशन चूज किया है ना. We will create data set. This is the research. Okay. ये रिसर्च नहीं है कि मटेरियल नहीं है तो इस टॉपिक पे काम नहीं होंगे. यही तो सबसे बड़ा लेकुना है. यदि मटेरियल नहीं है तो हम डेटा सेट क्रिएट करके देंगे. इस हिसाब से तो हम फाउंडेशनल फिगर हो गए ना उस फील्ड में. True. मैं यही कहना चाहता हूं कि एक ड्राइवर भी यदि बहुत अच्छा है, उसकी भी इम्पोर्टेंस उतनी है जितना एक कुक बहुत अच्छा है, और उतनी भी इम्पोर्टेंस है यदि एक सर्जन बहुत अच्छा है, उसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है कि ये प्रोफेसर बहुत अच्छा है. नाउ आप कहेंगे विच इज बेस्ट. I would say which passionates you, which keeps, like, ultimate goal of research is, do you want to get a degree? You can get any topic that but do you want to make earning out of that? Do you make happy life out of that? Then I would suggest go to the topic, take the topic, maybe most challenging but most passionate topic. Don't take any reactionary topics. आज है ना इजराइल है, ईरान अमेरिका वॉर हो रहा, लेट्स टेक ऑल दीज थिंग्स ना. बाद में पता चले कोई इसमें कोई टॉपिक बचे ही नहीं. एवरीबॉडी हैज टेकन द टॉपिक. एवरीबॉडी इज इन ईरान एक्सपर्ट. नाउ ईरान ही नहीं रहेगा, एक्सपर्ट बन क्या करो, है ना. सो यू हैव टू चूज what is your orientation. Okay. What would be your purpose of your research? Whether you want to be a consultant to the government, or you want to be an activist, or you want to be a teacher. So you have to weigh all those options. So there is no shortcut actually. है ना. Most oftenly we choose topics based on our training during the coursework. So during coursework, you are in a formal setup, you are introduced to certain readings, then you are having constant mentorship also. Now, the whole of India,
the coursework has become mazak. So if you don't have a coursework, proper training, now you are looking for a good soldier. If you don't provide good training, how can you find good soldier? The countries say that research का quality खराब हो गया है. अरे रिसर्च का क्वालिटी इसलिए खराब हो गया कि रिसर्च जिसको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी यूनिवर्सिटीज में, पीएचडी में, वो उनको फौजियों जितनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो आपके देश के निर्माण के लिए है ना. अब उनको ट्रेनिंग नहीं दी और उनको कह दिया आप है ना स्कॉलरशिप ले लो और कर लो कुछ भी, कुछ ही कर लो. दैट इज माय एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू. एक लास्ट प्रश्न है सर. ये राजेंद्र हैं, पीएचडी स्कॉलर अजमेर विश्वविद्यालय से. लिखते हैं, अपने रिसर्च में मैं पुस्तकों और शोध लेखों का उपयोग कर रहा हूँ, साथ ही इंटरव्यू भी ले रहा हूँ और कुछ डेटा भी शामिल किया है अपनी योजना में. ऐसी स्थिति में मुझे ये समझने में कठिनाई हो रही है कि मुझे कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए. मेरे काम में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के तत्व है, साथ ही टेक्सचुअल एनालिसिस भी शामिल है. तो क्या इस प्रकार के शोध में मुझे किसी एक विशेष मेथड को अपनाना चाहिए या फिर सभी का मिश्रण या मिक्स्ड अप्रोच का उपयोग करना उचित रहेगा? ये जो पूछ रहे हैं कि आर्टिकल्स एंड बुक्स यूज कर रहे हैं, देखिए, और इंटरव्यू ले रहे हैं. अब ये बेहतर होता कि ये लिखते कि ये टॉपिक मेरा ये है ना, तो मैं कुछ उनको सजेस्ट कर पाता कि आपके इस टॉपिक में ये अप्रोच ज्यादा फिट बैठती. अब जो बातें इन्होंने लिखी है ये सभी यूज करते हैं, है ना. पर अब क्या टॉपिक है उनका, क्या इनकी पजल है. यदि ये लिखते कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये है और मेरी हाइपोथेसिस ये है, अब इस तक पहुंचने का जरिया बताइए मुझे, हाउ आई शुड रीच देयर. तो किताबें आपने पढ़ ली, आर्टिकल पढ़ लिए, अच्छी बात है, और इंटरव्यू भी ले लिया, अच्छी बात. किस बात पे इंटरव्यू लिया है भाई साहब, क्या पूछा इंटरव्यू में, कैसे डिजाइन किए इंटरव्यू, है ना. आपके जो इंटरव्यू लेने वाले जो सोर्स है वो कौन है ना. इंटरव्यू लेने वालों की बात एक बता के खत्म करूंगा 1 मिनट में. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास एक रिसर्चर इंटरव्यू लेने गया डेवलपमेंट स्टडीज का. उसने कहा कि भाई साहब आप ये बताइए कि ये इंटरव्यू जो ले रहे हैं ये पीएचडी की क्वेश्चनियर है या एमफिल की क्वेश्चनियर है. उसने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो. बोले यहाँ 20 लोग मेरा इंटरव्यू लेके चले गए, मुझे आज तक पता नहीं है कि उस डाटा का क्या हुआ, मेरी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना. मेरे को साइट किया है कि नहीं किया उसका मुझे पता नहीं है, ये रिसर्च कहाँ सबमिट हुई उसका मुझे नहीं पता है. तो आप अपनी ये जो कॉलम फिल करने के लिए ना कि साहब इतने इंटरव्यू ले लिए मैंने, तो क्यों ले लिए भाई, है ना. किसका इंटरव्यू लिया, आप चलते का इंटरव्यू लेके कहेंगे साहब मैंने ले लिया. तो इलेक्शन स्टडीज है, एक्सपर्ट इंटरव्यूज है, ये सब चीजें जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक अपन कुछ कह नहीं सकते. थैंक यू. तो सभी स्कॉलर से भी आग्रह है कि अपनी सभी डिटेल्स क्वेश्चन के साथ भेजिए, जो रेलेवेंट डिटेल होनी चाहिए. और सर अब हमारा समय लगभग समाप्त हो चुका है सर, 6 बज गए हैं. 1 घंटे का लेक्चर का टाइम था. और सर मैं आपका कैप परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. आपने जो अपना मूल्यवान समय हमारे राजस्थान के स्कॉलर्स के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और सर हम आशा करते हैं आप भविष्य में भी हमें इसी प्रकार समय देते रहेंगे, और इन जो मुद्दे हैं, रिसर्च से संबंधित जो मुद्दे हैं, इन पर सर हम एक लंबी चर्चाएं और आयोजित करने वाले हैं भविष्य में. आपका सर कैप परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you Murli. I enjoyed a lot and looking forward to see you. And anybody who has a concern can write to me with specific details. I can help you as much as I can. Thank you so much. See you soon.